Welcome to one and all. From the team of Unique, I am Harin Desai, PhD in Electrical Power Systems. Welcoming to all for the session, which is on project cost optimization by energy design and practice. So, in this particular session, we are focusing towards the optimization for cost as well as for the energy, and what are the importance of engineering and design for this to achieve this optimization, that we will focus. So first of all, before starting the session, I would like to introduce myself. I'm Harin Desai. Previously, I'm working as an professor at SVNIT Surat, and now I'm working with the Unique Electricals with the design team. So let me start the session. So first, what do you mean by optimization? So optimization word comes in terms of energy. That suppose we have some input energy available, which is in any form, right? So as we all know that once we are focusing on solar PV system, so we are using sunlight as an input energy, which is ultimately free of cost. So now what we have to do, we have to convert this sun energy into the electrical energy through the system which we are installing, and we all are within the same domain. So how we can do that? With the help of solar PV systems. So our target is to develop the system in such a way so that whatever energy, in our case it is a sun energy, so we can utilize it as much as possible and convert it into the effective output electrical energy with cost, with the nominal cost, right? So ultimately energy optimization is not only the energy part, but also it should be cost effective. So these two are the major terms which we have to focus. So ultimately that we are covering in this session, that two optimization things are there. One is the cost optimization, another one is the energy optimization. So moving on towards the flow of the session. So first we'll discuss about the introduction towards our company, that is Unique Electricals. Then why engineering design is important, solar PV module selection, because we have in market two types of solar PV modules available, that is mono and poly. So which one to go for in which condition, that we will conclude in today's session. Then the next point is structure analysis and selection. Next one, that is inverter selection criteria, and then one case study is there. So moving on further, about the introduction towards our company, that Unique Electrical is working in this area since last more than 10 years, and till date we have commissioned 20 megawatt of solar plants all over sectors, starting from the residential, commercial and industrial, as well as ground mounted. And if you talk about the design expertise of the Unique Electrical, so we have designed up till 45 megawatt of solar plants till date, and still we are continuing it further. So how you can Unique, if I can introduce in one line, so Unique means design, manufacture, supply, installation, commissioning. So it is a complete solutions towards the solar system. So that means Unique to you all. Moving on further, there are certain important aspects which we have to consider for engineering and design. So what are that aspects which we have to consider for any engineering design? So let us go one by one. First is a maximum utilization of solar resources. Now what do you mean by maximum utilization? See, in first introduction I have told you that the we have to optimize the energy in such a way that we can use it 100% or nearer to 100%, right? So convert solar energy to electrical energy. So it is as much maximum possible we have to utilize. So ultimately this point focused on that our system, whatever we are developing, so we have to develop it in such a way so that it can be utilized the minimum area
and it can generate maximum energy, because if maximum energy generates, then and then only maximum revenue generation is there. And if it consumes less area, ultimately we can save the revenue at that place. So ultimately our target should be towards cost optimization, not with the compromise of energy, but with parallel to the energy, right? So this is the main constraint, so that is considered as a maximum utilization of solar resources. Okay, next point, that is energy forecast. So once we develop our system, so the development of the system is based on certain certain thumb rules, certain software references are there, based on which we are identifying the total energy forecast. And these energy forecasts we are focusing for the 25 years of solar cycle, because our solar plants are working for the 25 years. Afterwards also it is there, but we are considering up till 25 years. So suppose if I take one example, so suppose I am having a particular area, so and currently if I consider ground mounted system, so in ground mounted case we are we are having the 500 kilowatt systems available in Gujarat SSDSP scheme. So if I consider that example, so how much area should be required to mount the solar system? So that area we have to identify first of all. Now whatever panel installation is there, whatever electrical installation stuffs are there, and whatever mechanical stuff installations are there, so all these services together we have to mount, we have to erect in such a way so that it can use minimum land. So ultimately if the land reduces, ultimately all benefits in terms of cost we can have, and not but at the compromise with the energy, as I earlier said to you, right? So according to this, once after developing this design aspects, then we will with the use of the PVC software, if we can with the help of the location, longitude, latitude selection, everything we will do. So according to that, and according by considering all the parameters of that system, what we have, we are concluding one final output generation value. So that final output generation value is the actual unit which your system will generate throughout 25 years. Ultimately we say that 500 kilowatt of plant is there, so it doesn't mean that it can generate in the same manner, that 500 kilowatts it can generate in the same manner, right? There are certain degradations, there are certain the location effects, sun effects, many things are there, right? So ultimately when we are considering any of the design, we have to identify that what my plant will actually generate, right? So the energy forecasting will give us the actual data. With the help of some software base, we will identify it, and for the 25 years of cycle we will identify that how much your actual your plant can give you the actual unit. So that we will consider it for the energy forecast. Next is the increased system reliability. Reliability means generally if we consider the conventional system where engineering aspects are not considered that much, we are going through the standard practice which is followed in the market. So in that case there are certain chances for the deviation, transients and faults generations, right? Because suppose for again what's if with the same example I gave, if I can explain that suppose 500 kilowatt system is there, and it is that at Jamnagar area we are using some switch gear, some cables, and certain angles, tilt angles, and so things, we and the same we will put at some other South Gujarat area or some middle Gujarat area. So ultimately it should have the constraint, location to location, area to area, our certain constraints are there that we have to take care. If we are taking the replica of the same power solar system from one place to another place, ultimately it will not work. See, ultimately it will not work in the sense it will work, but it will not work with the 100% efficiency, 100% performance which actually needed for any of the revenue generation, for any of the cost optimization, right? So for that we have to focus towards the reliability of the system, that we have to design location to location, area to area, we have to design in such a manner so that your system can perform without any transients, without any deviations, and without any faults. If faults are less, your system will continuously operate. If your system continuously operate, it will generate energy, and it will give you the revenue. If any fault occurs, ultimately it will be the cost loss to us, right? So ultimately our focus should be to develop a system in such a way so it will generate minimum loss, minimum faults, and maximum output. So that can be considered in the
increase system reliability. Next point, reduction in loss and increase profitability. Now, what do you mean by this? Ultimately, once you increase the reliability will increase with the sound engineering technology and sound designs. So if we achieve it, ultimately it will reduce the losses, right? Because if deviations are less, transients are less, your fault generation is less, ultimately the loss which is there in the system will be less. So your cost loss is also less, right? So we can consider the loss in all the manner. So by achieving the proper plant design, we can reduce the losses as well as we can increase the profitability of the plant, right? So that also we can achieve with this, with the proper and sound engineering designs. That also is possible. Next point, that is reduce unwanted deviations. So again, which is similar to the earlier points, that if the switchgear equipment which we are using is proper, because see, in certain switchgear equipment it is there that the equipments are not able to identify whether it is a faulty condition or whether it is a transient condition. So ultimately it will give you the false stripping in some certain cases. If we use the replica of the plant from one place to another place, this is the thing which might get happen. So to plant we have to select the electrical things, the switch gears, the cable sizes, the inverter selection, the panel selection, and all those things, and at the last the transformer, right? So transformer selection. So ultimately if we select all these things in proper way, we can reduce the overloading condition, we can reduce the fault stripping condition. So ultimately it will reduce the unwanted deviations which are there in the system. If these all are called unwanted deviations, so if we can neglect these things, ultimately we can have the continuous operation throughout the sun cycle, throughout the day, right? So in that time, at that time our system will work with a full efficiency. So that is the unwanted deviation. And the last but not the least point, that is proper selection of material and quality check. Now what do you mean by this? This term comes at the last, because once we design the plant, after designing the plant, we will the execution team will start executing the plant. So once the execution start, according to the design you have to procure the material. So we will provide you the services in two ways. One, pre-procurement and post-procurement. Now what do you mean by pre-procurement? Once we give you the design, according to the design you will start procuring the material. So we will check whether you are procuring the correct material with the correct specification, or if it is not achieving the criteria which are developed at the time of design, so we will suggest that this should be improved. So according to that you can improve the things, and it is ultimately, if this kind of suggestions will always save the cost, right? Because we will purchase the thing which is cost optimized and the with the better performance. In any of the, like you will purchase cable, you purchase the structure. So if you got let us say if you purchase some size of structure and if it is not mandatory over there, or some micron level is not achieving with that, so ultimately that kind of suggestions we will provide you. So according to that you can go with the perfect deal for material procurement, right? So if the material procurement is perfect, your quality of material is perfect, according to that only your plant can sustain for the whatever life cycle we are expecting for our plant to generate the output, right? So with this we can make our plant procurement more easier. And once you procure the material, afterwards at the time at a site, or once your material comes, at the time also we will check that whether your quality of the material which is actually coming to site is sound enough, is as per the specifications which are mentioned or not. So once this is a complete package, means once you this is a pre-procurement and post-procurement. So ultimately once we will check at the site level, then only you can start erecting the things, right? So ultimately that will give you the most very most benefit towards the system installations. So these all are the main aspects which we have considered. Moving on further, this is the one very major topic which we want to focus on today's session. That is the we have introduced the word, that is cost optimization. So how you can actually achieve the cost optimization? So see, the in any of the solar plant, the first focus should be, because it is a solar plant, we have to select the solar panels. So the first important question comes in that case, that is which kind of panel we have to select. Either we have to go with the poly, or we have to go with the mono, right? So
how to select the panel, we have one case study. Based on that, we will give you the suggestions that with the in the which condition which kind of panel you should go for. So, and it is not only the panel, there is a certain calculation which we have to consider for concluding this panel selection. So for that, one important aspect we are introducing, that is called levelized cost of energy. Now, what do you mean by levelized cost of energy, LCOE in short? So you can see one equation I have represented over here, that is the LCOE equals to total life cycle cost divided by the total lifetime power produced. So what total life cycle cost means, whatever investment which you are doing for making the solar plant in any of the case, either in rooftop, either in ground mounted or anywhere, whatever investment you are doing, that is your capital cost which you are investing, and according to that, how much power generation you will achieve throughout the 25 years of cycle, right? That we have already identified based on the energy forecasting technique. So these two values are already available with us, so you can take the ratio analysis of this, and it will give you one final value, which value is called as an LCOE. That indicates this amount of this is the amount which is you have to bear फॉर दी एनर्जी जनरेशन। मीन्स आपको जब आप एक यूनिट जो आपके प्लांट के अंदर जनरेट होगा तो वो आपको इतने रुपए में पड़ेगा जी, एलसीओई का जो फैक्टर आएगा उतने में आपको पड़ेगा, और आप उसको आगे सेल, इफ अगर ग्राउंड माउंटेड की बात करते हैं तो ग्राउंड माउंटेड में आप उसको 2.83 पे आप गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप आपका इनपुट और आपका आउटपुट, तो उस पे से आप आपका टोटल मार्जिन पर यूनिट आपका कितना होगा वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन कंक्लूड कि मेरा सिस्टम कितने टाइम के बाद और कब से मेरा रेवेन्यू जनरेट करेगा, कितना अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट करेगा, आपको एक्चुअल कितना फायदा होगा सिस्टम से। सो आपको सीधा रिफ्लेक्शन मिल जाएगा अगर आप ये एलसीओई टेक्निक को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे तो। और इसको ज्यादा इलोबरेट करने के लिए यू कैन वी हैव placed over here one case study. This is the case study which is developed based on one solar plant of the 600 kilowatt at Amreli region. So in this you can see we have compared two different solar panels, and with that which panel is costlier, which panel is cheaper to identify, and with the all supporting cost which we have to consider, right? So you can see starting from the solar panel, in case of poly, what is the value? See, all these values are assumed values, right? So you can consider just for a case study, not for the actual output, okay? Because condition to condition, location to location, all these parameters may get changed, right? So to understand LCOE, we are considering this. So first thing is solar panel. So in case of poly you can have 19.7, in case of mono you have 22. All these parameters are considered based on some reputed companies, right? It's a tier 1 company, so you can it will give you the actual results. Okay, next one, that is the structure. So what is the cost of structure that you can identify from this? In case of poly, your structure which is used, costing for the structure is more because poly is somewhat size of the panel is more, so ultimately the structure cost will be divided accordingly. And over here we have considered 15 into 2 table for the for a particular row of the panel, so that is there. Then inverter selection, inverter पर 1.8 रुपीज पर वाट आपको होगा। फिर आपका टोटल जो ओवर जनरल बीओएस आपका होगा पूरा प्लांट का, वो पूरा बीओएस प्लस आपका सबस्टेशन के अंदर वॉट एवर इक्विपमेंट्स आर कमिंग। सो इफ यू प्रोक्योरिंग ऑल दिस थिंग्स, इट विल बेयर वी हैव टू बेयर 3.74 in case of poly, 3.50 in case of mono. These all values are only per watt peak and not as a whole, right? So you just take it as a watt peak, और आपका जितना टोटल प्लांट का कैपेसिटी होगा उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग वर्क, उसका आपका कॉस्ट 2 and 1.8 होगा। लैंड कॉस्ट हमने कंसिडर किया है 8 रुपीज, और मोनो के केस में 7 रुपीज, बिकॉज इसका साइज कम है तो अल्टीमेटली समवॉट आपका डेविएशन लैंड कॉस्ट में भी हो सकता है। Then the next thing, that is the total cost. So once you are taking the summation of the whole, you have one value, that is 38.04. In mono case you have 38.5, and the final, after considering this 38.04, and if you go through the 600 kilowatt of total capacity, this is the cost which you can have in the serial number 7. This is your actual investment, right, which you have to consider. And see, we have only considered capex and not opex, right? So just take care of this if you because opex may get deviation somewhat, but right now for understanding only we are considering, so we have considered capex values. So this is the two different values as in total investment is coming, and
इन द नेक्स्ट पॉइंट इज द आउटपुट जनरेशन, टोटल आपका प्लांट 25 ईयर्स में कितना पावर जनरेट करके देगा, यूनिट पावर कितना होगा, तो ये आपका वैल्यू हो गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू this equation, if you take the total capital investment divide by the total generation means 7 डिवाइड बाई 8, तो उससे आपको एक फाइनल वैल्यू मिलेगा, वो आपका है यहाँ पे पॉइंट नंबर 10, दैट इज द LCOE। सो ये आपको पॉली के केस में मिलेगा 0.98 और मोनो के केस में मिलेगा आपको 0.89। मींस ये पर्टिकुलर सिस्टम, ये प्लांट के लिए अगर आप मोनो पॉली पैनल यूज करेंगे तो आपको एक यूनिट 25 ईयर्स के लिए 0.98 रुपीज में पड़ेगा और मोनो के केस में आपको 0.89 रुपीज में पड़ेगा। और उसको आप सेल जो भी 2.83 के हिसाब से करोगे तो उस पे से आप अपना फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसको मोर स्टडी आप अपने लेवल पे कर सकते हो और अगर इसका ज्यादा वो है तो हम उस पे नेक्स्ट एक सेशन भी रख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। नाउ these all are the details regarding the mechanical structure which we will discuss at the last. Next point is the inverter selection criteria. Now once you consider all the whatever electrical equipments are required, whatever is the BOS, whatever are the other cost is, that things we have identified, right? Now the next very important point which is the heart of your solar system, that is called as an inverter. So inverter का selection कैसे करेंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास मल्टीपल रेंज के इन्वर्टर्स अवेलेबल है मार्केट में, स्ट्रिंग मल्टी स्ट्रिंग इन्वर्टर्स है, मल्टीपल एमपीपीटी टेक्निक इन्वर्टर्स अवेलेबल मार्केट में है, तो कौन सा इन्वर्टर सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये कुछ कुछ बेस पॉइंट्स है, तो उसको हम अगर कंसीडर करते हैं तो हम एक अच्छा इन्वर्टर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आपका एफिशिएंसी अच्छा मिलेगा और जिससे आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज द मैक्सिमम एरे VOC in the coldest daytime temperature must be less than the inverter maximum DC input voltage। अभी सबसे पहले तो आपका जो इन्वर्टर है उसका इनपुट DC वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो जनरली वी आर कंसिडरिंग 1000 to 1500 इनपुट वोल्टेज रेंज फॉर द इन्वर्टर। नाउ आपका जो इनपुट वोल्टेज होगा इन्वर्टर का, वो ये दोनों मिनिमम मैक्सिमम, और ये जो पर्टिकुलर हमने ये मैक्सिमम वोल्टेज जो कंसीडर किया 1000 और एल्स 1500, तो वो उसको एटलीस्ट उसको में मिलना चाहिए, तब जाके आपका क्या होगा, आपका इन्वर्टर 100% एफिशिएंसी पे आउटपुट दे सकता है। तो उसके लिए इसको इतना इनपुट वोल्टेज मिले तो उसके लिए हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा दो टेम्परेचर इफेक्ट्स होगा पूरा वेदर में, एक आपका पूरा ईयर का एक कोल्ड टेम्परेचर होगा, दूसरा एक आपको हॉट टेम्परेचर मिलेगा, दो अलग अलग सीजन्स में आपको ये आप फेस कर सकते हैं। तो आपका सोलर एरे जो है उसका जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा, तो वो कोल्डेस्ट वेदर होगा तब क्या है आपका एरे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर सकता है। तो आपका जो इन्वर्टर है, तो ये जो आउटपुट कोल्ड टेम्परेचर में जो आपका पैनल जो मैक्सिमम आउटपुट डीसी वोल्टेज जनरेट करके देगा, तो वो आपका इन्वर्टर बेयर करना चाहिए। और नेक्स्ट जब आपका एक हाई टेम्परेचर वाला सीजन आएगा, उस टाइम में आपका पीवी एरे का आउटपुट वोल्टेज कम हो सकता है, तो उस केस में वो जो कम वोल्टेज इन्वर्टर में जाएगा वो भी आपका इन्वर्टर इनपुट एज एन इनपुट लेके आउटपुट वोल्टेज जनरेट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हॉट टेम्परेचर आ गया, वोल्टेज इनपुट कम हो गया तो अल्टीमेटली आपका इन्वर्टर ही टर्न ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मेन कंस्ट्रेंट्स है, वो आपको वी हैव टू प्री डिफाइंड इट। सो अकॉर्डिंग टू डिजाइन वी कैन प्री डिफाइन इट कि आपका मिनिमम वोल्टेज डेविएशन मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका इन्वर्टर वर्क करना चाहिए, इसको तो बेयर करना ही चाहिए, तभी जाके आप पूरे साल के लिए थ्रू आउट द 25 इयर्स ऑफ साइकिल योर इन्वर्टर विल सस्टेन एंड विल गिव यू द एक्चुअल एफिशिएंट आउटपुट, तो आपको उससे कॉस्ट लॉस कम होगा। तो इसको आप एक डेविएशन में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इन्वर्टर मस्ट बी एबल टू सेफली विथस्टैंड द मैक्सिमम एरे करंट। अभी आपका जो सोलर सिस्टम है तो उसका एक फाइनल टोटल करंट होगा, आपने सीरीज पैरेलल कनेक्शंस कर दिया तो उसका अकॉर्डिंग आप एक फाइनल टोटल करंट कितना आपका सिस्टम जनरेट करेगा वो आइडेंटिफाई कर लोगे। तो वो जो करंट है वो आपका इन्वर्टर का करंट कैरिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो करंट वो आपका इन्वर्टर सस्टेन कर पाएगा। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप सिंगल इन्वर्टर में जाओगे, डबल या फिर मल्टी इन्वर्टर में जाओगे, तो ये एरे टू एरे कितना करंट आउटपुट आ रहा है उसका अकॉर्डिंग ही आपको इंडिविजुअल इन्वर्टर को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी केस में ज्यादा करंट है तो उस जगह पे ज्यादा करंट का इन्वर्टर, कम है तो वहां पे कम करंट का इन्वर्टर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारा पूरा सिस्टम फॉल्ट हो जाएगा। So that also one thing which we have to consider. Next is a use multiple MPPT
inverter for good efficiency. Now MPPT means maximum power point tracking for the inverter. So आपका इनपुट डीसी वोल्टेज में डेविएशन आएगा तब भी आपका आउटपुट एसी वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये आपका ये इन्वर्टर के अंदर जो एमपीपीटी होगा उससे ये मेंटेन होता है। अभी एमपीपीटी का मैं आपको एक जस्ट बेस बता दूं तो एमपीपीटी में इनपुट जो वोल्टेज जाएगा एरे से, तो वो जो सबसे कम वोल्टेज होगा, तो उस स्ट्रिंग इन्वर्टर की बात करूं तो उसमें जो कम वोल्टेज होगा उसको वो एज अ बेस ले लेगा और उसका अकॉर्डिंग उसको एम्पलीफाई करने की ट्राई करता है, राइट। तो अगर आपका एक एरे के अंदर वोल्टेज कम है, दूसरे एरे में वोल्टेज ज्यादा है, मे बी ड्यू टू सम शेडो इफेक्ट और सम वेदर सम व्हाटएवर इफेक्ट इज देयर, तो उसके कारण क्या होगा, आपका एरे टू एरे आउटपुट वोल्टेज डेविएट होगा। और अगर आप सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर पे जाओ तो उस केस में क्या होगा कि आपका बेस वोल्टेज जो सबसे कम होगा वो कंसीडर करके उसका अकॉर्डिंग आपका इन्वर्टर परफॉर्म करेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एफिशिएंसी होगा इन्वर्टर का वो उतना अचीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है, बाकी का एरे पीवी एरे ज्यादा वोल्टेज दे रहा है तो उसको तो कोई कंसेंट्रेशन ही नहीं मिला, आपको इन्वर्टर को ज्यादा काम करना पड़ा, तो अल्टीमेटली यू हैव टू बेयर द लॉस इन दैट केस। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू यूज मल्टीपल एमपीपीटी techniques, right? And so what and we have to select the array multiple distributed arrays as an input to all these distributed MPPT techniques. So क्या होगा, आपका इनपुट एरे का वोल्टेज डिफरेंट विद एज अ डिफरेंट बेस कंसीडर करेगा इन्वर्टर। सो उसके अकॉर्डिंग एक फाइनल जजमेंट लेगा कि what is your optimal voltage of the system, and according to that only your inverter will work and it will give you the output voltage. So ultimately ये केस में क्या होगा, एक आपको एक ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन इन्वर्टर खुद करेगा ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीपल एमपीपीटीज। सो अकॉर्डिंग टू दैट योर इन्वर्टर will work with a good efficiency. So it is must that we have to go with the multiple MPPT inverter for maintaining the good efficiency of that particular inverter, क्योंकि हमको उसको 25 years तक चलाना है। अगर उसमें प्रॉब्लम है, ज्यादा मेंटेनेंस जाएगा तो हमको कॉस्ट लॉस हो सकता है, तो इस केस में हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर एज एन one important point for the cost optimization. And once we achieve all these things, ultimately we will achieve economic and cost effectiveness at the last. So by concluding this, the final block is will give you the total cost effectiveness for inverter selections. So I hope कि आपको inverter selection का basics थोड़ा clear हुआ होगा। Next point, this is also one important point, that is called pitch and tilt optimization in the solar system. Now, to explain, to elaborate these two things, I have one figure available. Based on that, I will elaborate this to you. So, what do you mean by pitch? So, ultimately, pitch you can see over here. We have two arrays which are situated parallel to each other. So pitch means suppose and left hand side is my first array. You can see the red line. So red line is a center line. So center from left to right, center to center distance between these two arrays, that distance is considered as a pitch, and we have to optimize this distance as minimum as possible, तो उसके कारण आप कम एरिया में ज्यादा एरे लगा सकते हैं। सो अल्टीमेटली आवर पिच सिलेक्शन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द आउटपुट परफॉर्मर, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो आपको शेडो जो होगा वो शेडो तो आना ही नहीं चाहिए, और वो ना आके भी हम उसको कितना नजदीक तो नजदीक ला सकते हैं, तो दैट वी कैन अचीव बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। सो दैट इज अ पिच एनालिसिस। एंड नेक्स्ट वन, दैट इज द टिल्ट ऑप्टिमाइजेशन। अभी टिल्ट ऑप्टिमाइजेशन में कैसा होगा कि सपोज यू हैव टू, वी आर कंसीडरिंग राइट नाउ टू डिफरेंट tilts. One is a fixed tilt and another one is a seasonal tilt, right? So you can see your sun direction is like an from one side to another side. So in that case suppose आपका जो irradiance होगा तो वो throughout the day आपका half circle में आपका sun जैसे move करेगा, तो उसमें आपका क्या होगा, irradiance value, आपका जो impartation होगा, जो energy impartation होगा पैनल के ऊपर, उसका एंगल चेंज होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द डे वो एक ही एंगल पे इम्पार्ट करेगा। तो जैसे जैसे आपका ये इम्पार्टेशन एंगल चेंज होता है सन रेडियंस का, तो उसका अकॉर्डिंग आपका जो पैनल का आउटपुट परफॉर्मेंस है वो भी वेरी करेगा। सो इट इज नॉट, सपोज हमने हॉरिजॉन्टल रख दिया तो उसका जो परफॉर्मेंस आएगा, हॉरिजॉन्टल मींस इफ इट इज नॉट एट एनी ऑटो एंगल बट जीरो एंगल के हमने अगर सोलर एरे रखा, तो उस केस में हमारा जो एनर्जी आउटपुट मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलेगा, उससे अगर आप उनको ये सिस्टम को कोई पर्टिकुलर एंगल पे फिक्स करते हैं,
जैसे हमारा सन का वहां पे वो पर्टिकुलर लोकेशन में मूवमेंट कैसा है, जो हम उसका वहां का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ पीवीसी सॉफ्टवेयर वी कैन आइडेंटिफाई। सो उसका अकॉर्डिंग हम एक फाइनल मूवमेंट सन का कैसा है उसका अकॉर्डिंग हम एक टिल्ट एंगल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसका अकॉर्डिंग हम उसको वो पर्टिकुलर एंगल पे फिक्स कर सकते हैं। अभी क्या है कि हम अभी जो जनरलाइज सीजनल टिल्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या है, हम वो जो मार्केट में जनरलाइज चलता है 5 डिग्री से 5 डिग्री और 20 डिग्री, तो वही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि वो हर जगह, जैसे मैंने आगे बताया कि लोकेशन टू लोकेशन आपका एंगल डेविएशन होना ही होना है। तो जैसा आपका लोकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम टिल्ट एंगल आइडेंटिफाई करें तो हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। सो उसके लिए ये एक एलोब्रेशन यहाँ पे आपको दिखाया है हमने कि कैसे आपको मैक्सिमम विदाउट शेडो आपका टिल्ट एंगल हम रख सकते हैं। टिल्ट एंगल ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपको कोई शेडो इफेक्ट भी ना आए और हमको मैक्सिमम आउटपुट भी मिले। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द with the utilization of PVC software we have identified at the left hand side you can see the tilt angle we have considered, that is 20 degree, and pitch that is the distance between two arrays which is considered as an 6.60 meter. So अगर ये दोनों हम कंसीडर करते हैं तो उसके केस में हमको जो शेडो फ्री आउटपुट मिल रहा है तो उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू आउट दिस यू कैन सी दिस इंटरसेक्शन। ये जो आपको बॉटम से लेके थर्ड डॉटेड लाइन मिलेगा वहां से यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 9 आवर्स का ये जो लाइन है, सो 9 आवर्स का इंटरसेक्शन और यहाँ पे 17 आवर्स का इंटरसेक्शन। तो यह जो शेडो है वो उसके नीचे की ओर है। सो विद दिस वी कैन आइडेंटिफाई दैट योर सिस्टम from morning 9 to evening 5 your system will give you the performance without any shadow effect। और इसमें आपको इतना पिच, मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना, आपका टिल्ट एंगल इतना रखा, तो आपको विदाउट एनी शेडो आपको सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक विदाउट शेडो आपको एनर्जी रेडियंस मिला। तो ये हम आपको एक आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कि आपको शेडो फ्री मैक्सिमम एंगल पे मैक्सिमम इम्पार्टेशन कितना मिलेगा, जिससे आपका परफॉर्मेंस बेटर टू बेटर हो सकता है, जिससे आपका कॉस्ट रेवेन्यू जनरेशन ऑफ द सिस्टम आप अचीव मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये आप इस पे से कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इसको ज्यादा एलोबरेट करने के लिए हमने यूपी के अंदर एक 8 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया है, उसका पूरा डिजाइन हमने तैयार किया है। तो उसका केस स्टडी मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसमें ऐड किया हुआ है, तो इस पे से आप ये पीच और टिल का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। So you can see over here I have one case study in which I have the you can see one column that is hours, next column that is the GHI Weber per meter square, that is the irradiance of the sun, और आपको अलग अलग टिल्ट पे कितना कितना पिच रखना चाहिए जिससे आपको ऑप्टिमाइजेशन मिले। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको 9 आवर्स के लिए 185 अगर आपका इरेडियंस है तो आपको अगर आप 20 टिल्ट रखेंगे तो आपको पिच दो के बीच में 6.6 रखना पड़ेगा। अगर 21 में जाओगे तो 6.7 हो जाएगा, 22 में जाओगे तो 6.8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको टिल्ट एंगल ऐसा रखना है कि जिससे आपको मैक्सिमम एरिया कवर भी हो सकता है और आपको शेडो फ्री मैक्सिमम आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन आइडेंटिफाई फॉर डिफरेंट आवर्स फॉर डिफरेंट इरेडियंस यू कैन सिलेक्ट द टिल्ट, and at the last you can perform in the PVC software and you can generate the curve based on which you can identify the final results for the shadow free power generation। and this one is by which you can identify, you can conclude कि अगर हमने 20 का टिल्ट रखा है तो आपको पावर जनरेशन at the last 17,214, for 21 it is 17,227, for 22 it is 17,235, for 23 it is 17,237 and at 24 it is 17,232। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 के केस में आपको मैक्सिमम पावर जनरेशन मिल रहा है। सो हमने ये सिस्टम के लिए 23 डिग्री टिल्ट कंसीडर किया कि उसके अंदर हमको मैक्सिमम आउटपुट पावर जनरेशन मिला, तो उसको मैंने यहाँ पे बोल्ड करके आपको दिखाया है। सो दिस इज माय कंक्लूजन व्हिच वी हैव आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द टिल्ट ऑप्टिमाइजेशन। Okay, so by which we have the maximum energy generation। Okay, so that's it from my side. Thank you so much for patience listening and I hope these things are clear to you। We will analyze it in more detail in future for the more briefing towards individual equipments of the system, so that you can have more and more detailed idea regarding the how the optimization techniques and engineering design techniques will work for the efficient performance as well as cost efficient cost revenue generation of the system।
So that's it from the Unique Electrical. Thank you so much. Have a nice day. ઓકે બતાવી દો.